In this video, we will check if the number is odd or even in Python. अगर एक नंबर इवन है तो वो 2 से completely डिवाइड होता है तो डिविजन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, बट इन पाइथन और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज वन मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर चेक करता है कि किसी नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या रिमाइंडर है. सो फंक्शन ये है कि इट चेक्स द रिमाइंडर और इट फाइंड्स आउट द रिमाइंडर. सो हम लोग यहाँ मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे. इफ ए मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, देन आपको कोलन लगाना है. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. Then you have to print if it completely divides by 2 or 0 remainder है तो वो नंबर even है. नंबर is even. Else आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है. Else उसी जगह पर स्टार्ट होगा जहाँ से आपने ब्लॉक स्टार्ट किया है. Then you have to write the print statement. अगर वो डिवाइड नहीं होता है पूरी तरह से 2 से, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तो नंबर इज odd. So number is even. So here I have pressed enter 2 times in Python ideally to get this output. और अगर आपको किसी नंबर को यूजर से एंटर करवाना है तो आप लेंगे a equal to int, then input function, then enter the number. और अभी यहाँ अगर हम 5 देते हैं then we have to write the same code. So we can write if a modulus 2 or if yes a modulus 2 equal to 0 1 देते हैं तो you have to print that if it leaves the remainder 1 then it is odd. I'm not given colon, that's why it is giving this type of error. So if a modulus 2 equal to 1 colon, print it is odd. Else same indentation we have to take care of. Print even. So 5 is an odd number, so it has given odd as the output.